सर्वेभ्यो नमो नमः. Welcome to my channel Voice of Sanskrit in Ayurveda. In this video, I will explain Vaidyakiya Subhashita Sahityam in that first chapter. That is Vaidyaka Shastra Vijnaniyam. What is the importance of Vaidyaka Shastra Vijnaniyam? Why Vaidyaka Shastra, that is Ayurveda Shastra, is a Sarvashreshta Shastra that is explained in the first chapter of Vaidyakiya Subhashita. You know, Subhashitas gives beauty to Sanskrita language. It increases the beauty of Sanskrita language. Already I told, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. संस्कृत भाषा सर्वसुंदर भाषा, सकल भाषा जननी. सुभाषिता, वैद्यकीय सुभाषिता, first chapter, that is Vaidyaka Shastra Vijnaniyam. I will explain in detail. Before that, if you are not subscribed my channel, please subscribe it, like it, comment it, press bell icon. वैद्यक शास्त्र विज्ञानीयम प्रथमो अध्यायः. टॉपिक वैद्यक शास्त्र विज्ञानीयम. फर्स्ट श्लोक. बिफोर दैट, वैद्यक शास्त्र विज्ञानीयम, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अबाउट व्हाट. What do you mean by Vaidyaka Shastra? Vaidyaka Shastra means Ayurveda Shastra. It is also called as Chikitsa Shastra, Ayurveda Shastra, that is Vaidyaka Shastra. Ayusho Vedaha, Ayurvedaha. What do you mean by Ayurveda? Hita hitam sukham dukkham आयुस्त्स्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेदः स उच्यते. हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्त्स्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेदः स उच्यते. चरका सूत्रस्थान. This shloka explains that Ayurveda, the science which deals with hita and ahita of hitayu, ahitayu, sukhayu and dukkhayu, and manancha, span of life. Mana, pramana, measure of hita and ahita is called as Ayurveda. Here it explains that there are 4 dimensions of Ayu, that is Hita Ayu, Ahita Ayu, Sukha Ayu and Dukkha Ayu. The science which deals with Hita and Ahita of these 4 dimensions of Ayu along with the measures is called as Ayurveda. Thus, Ayurveda means what? Ayurveda not only explains about Hita and Ahita, but also deals with the duration of Hita Ayu, Ahita Ayu, Sukha Ayu and Dukkha Ayu.
हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते. हित अहितं सुखं दुःखम् आयुः तस्य हित अहितं मानं च तत् च यत्र उक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते. हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते. आयुर्वेद पुरातन वैद्यकीय शास्त्र है. आयुर्वेद शास्त्र चिकित्सा शास्त्र, वैद्य का शास्त्र बुलाया जाता है. आयुषो वेदः आयुर्वेदः. आयु मतलब जीवित है. आयु 4 प्रकार की होती है: हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर. उस आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या होता है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा. आयुर्माना मतलब स्पैन ऑफ लाइफ कितना होता है, उसका विवरण जिसमें है वह आयुर्वेद कहलाता है. निरुक्ति of Ayurveda. Nirukti of Ayurveda. First one, Ayuh Asmin Vidyate iti Ayurvedaha. Means what? The science which contains the knowledge of Ayu is called Ayurveda. मतलब इसमें प्रतिपाद्य विषय के रूप में आयु वर्णित है, इसलिए ये आयुर्वेदा है. Second one, आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदः. आयुः विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदः. Meaning the science which pertains and gives the knowledge of आयु is called आयुर्वेदा. इसी आयु का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ये आयुर्वेदा है. थर्ड वन, आयुर्वेदयति इति आयुर्वेदः. आयुः वेदयति इति आयुर्वेदः. The science which deals about आयु is called as आयुर्वेदा. जो आयु का ज्ञान देता है उसको आयुर्वेद कहते हैं. फोर्थ वन, अनेन वा आयुः विन्दति इति आयुर्वेदः. अनेन वा आयुः विन्दति इति आयुर्वेदः. Meaning the science through which person attains long and healthy life is called as Ayurveda. जो आयु ऐसे मनुष्य दीर्घ और स्वस्थ जीवित प्राप्त करता है, इसलिए ये आयुर्वेद कहते हैं. लास्ट वन, फिफ्थ वन, आयुः विद्यते विचार्यते अनेन वा इति आयुर्वेदः. आयुः विद्यते विचार्यते अनेन वा इति आयुर्वेदः. Ayurveda is the science in which explanation and analysis regarding आयु is done. ऐसे आयुर्वेद का विचार होता है, इसलिए ये आयुर्वेदा है. काय वाग् बुद्धि विषया ये मलाः समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षण आध्यात्म शास्त्रैः तेषां विशुद्धयः. काय वाग् बुद्धि विषया ये मलाः समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रैः तेषां विशुद्धयः. Explanation. The Kaya mala, kaya means sharira. The sharira mala removed by the Chikitsa Shastra, that is Ayurveda Shastra. Vak mala, doshas of our vak, speech, removed by the
Lakshana Shastra, that is grammar, Vyakarana Shastra. Buddhimala, it is removed by Adhyatma Shastra. It is told that the Shariramala removed, respectively what it is told that the Shariramala, Vakmala and Buddhimala can be removed through Chikitsa Shastra, Lakshana Shastra, that is Vyakarana Shastra, and Adhyatma Shastra. Here it explains that Ayurveda Shastra removes the impurity in the form of disease from the Sharira. What do you mean by Mala? Mala means, according to Sharngadhara, Malinikaranat Malaha. What do you mean by dosha? It is told by Charaka, Vatadi Vikriti doshaha. Vatadi Vikriti doshas. Then, what do you mean by Buddhimala? Buddhimala means Arishadvargas. That is Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsara. So, it is told that Shariramala, Vakmala and Buddhimala removed respectively by the Chikitsa Shastra, Lakshana Shastra and Adhyatma Shastra. Kaya Vak Buddhi Vishayaye Malaha Samupastitaha Chikitsa Lakshana Adhyatma Shastrai Tesham Vishuddhayaha. शरीर, भाष और बुद्धि, इनके विषय में जो दोष यानी मल उत्पन्न हुआ करता है, उसकी शुद्धि चिकित्सा शास्त्र मतलब आयुर्वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र यानी ग्रामर और अध्यात्म शास्त्र से होती है। अध्यात्म शास्त्र मतलब क्या होता है और वो क्या करता है? अध्यात्म शास्त्र बुद्धिमलों को नष्ट करके मनुष्य को मुक्ति मतलब सॉल्वेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट श्लोका, सद्यः फलति गान्धर्वं मासमेकं पुराणकं वेदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरन्तरम्। सद्यः फलति गान्धर्वं मासमेकं पुराणकं वेदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरन्तरम्. The explanation of this, the effect of Gandharva Shastra, music. The effect of Gandharva Shastra is instantaneous. Masamekam Puranakam. Whereas effect of Purana Shastra retains for 1 month. Purana, Patana, Shravana. Puranas are 18 in number. Ashtadasha Puranas. Puranas are 18 in number. Masya Purana, Vishnu Purana, Kurma Purana, Skanda Purana, etc. etc. 18 Puranas are there. When it gives phala, it is told that the effect of Purana Patana Shravana retains for 1 month. Vedaha phalanti kaleshu. Veda Patana Shravana, when it gives its result, Veda gives result after a kaleshu, after a kala. Vedas, how many number? There are Chaturvedas. Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharva Veda. The Veda Patana, Shravana, hearing the Veda, reading the Veda, study of Veda, it gives result after a long time. But Ayurveda Shastra is not like that. Jyotirvaidyo nirantaram. Jyotisha Shastra, that is astrology, and Vaidyaka Shastra, that is Ayurveda, it
gives continuous and long lasting. Hence, in this shloka, it is told that Ayurveda Shastra, being Vaidika Shastra, is Shrestha. Why? As its effect passes from instantaneous to long lasting. Sadyah phalati gandharvam मासमेकं पुराणकं वेदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम. वैद्य शास्त्र मतलब आयुर्वेद शास्त्र हमारा जीवन के लिए अच्छा रास्ता दिखाता है. गाना मतलब सॉन्ग सुनने से हम खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने खुशी को भूल जाते हैं. पुराण 18 तरह की होती है. विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और बाकी पुराण पढ़ना सुनना 1 महीने के बाद हमें फलप्रद देता है. वेद 4 प्रकार की होती है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. वेद पढ़ना सुनना समय जाते जाते फलप्रद देता है, लेकिन आयुर्वेद ऐसे नहीं है. वो निरंतर ही मतलब सदा फलप्रद होती है. Once again, I am reading the shloka. You have to by heart it. Hita hitam sukham dukkham ayustasya hita hitam manancha tacha yatroktam ayurveda sa uchyate. काय वाग् बुद्धि विषया ये मलाः समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रै तेषां विशुद्धयः. सद्यः फलति गान्धर्वं मासमेकं पुराणकं वेदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरन्तरं. By heart these shlokas. If the remaining shlokas of this chapter explaining in my next video. If you like my video, please subscribe it, like it, comment it. Jayatu Samskrita Bhasha, Jayatu Ayurveda Shastram. Shubhamastu.